Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in yesterday's session, we started with very important concept that is strings in JavaScript. So basic things we saw, like what is string, the important characteristics of string, like it is immutable. You cannot do modification in place. New string you can create, right? Then index-based access, you can access the characters of the string on position basis. It supports all the characters, like Unicodes, everything is supported. Okay. Then the basic things we saw, creation of string, then accessing characters of the string, and then some methods we started, like char at, char code at. Okay. Then we saw the difference between at and char at. I hope you remember. Now, moving ahead, many more things we have to learn. Next is string concatenation. Concatenation means joining one string with another. Like if you're having one string and you're using plus operator. In JavaScript, plus is already overloaded on strings. So if you are using plus operator between two strings, it will just create and give you a new string in which there will be first string followed by second string. Okay. This way, a new string is returned. It is not going to do modification to either of them. S1 में भी change नहीं करेगा, S2 में भी नया string आएगा जिसमें S1 followed by S2. Okay. And JavaScript speciality is if one is a string and if another one is any other data type, then that other data types are converted to string and then concatenation takes place. In plus and other operators, string is converted to number. I hope you know it. Like 5 plus डबल कोट 3 लिखा है तो ये प्लस है इसलिए 5 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा एंड कॉन्कैटिनेशन होकर स्ट्रिंग 5 3 आएगा बट अगर आपने 5 एंड स्ट्रिंग 3 एंड कोई दूसरा ऑपरेटर यूज किया अदर देन प्लस like minus, multiplication, whatever, then in that case, number remains number, string gets converted to number. And then normal 5 into 3, 15 answer you get. Okay. And अगर इस string में कोई ऐसी string है जो number नहीं, तो फिर वो nan. I hope you know it. All this during operators we have learned. ठीक है? तो अभी actually वो बाकी operators का concern नहीं, जैसे plus के बारे में ही बात करना है, because we are dealing with string. So you can do concatenation of the string using plus operator, using plus. See, this is first string hello, second string world, and then I'm writing first string plus again an empty string or a string with a space, and then the third string. All these strings from left to right. It will have a standard associativity of plus. जो normal arithmetic plus का जो associative वही इधर follow होगा left to right. तो पहले hello will get concatenated with space, new string, फिर वो string and world, final ये string मिलेगा. And in this example you can see एक string है और एक integer है. So first it will do conversion of integer to string. ये 42 string 42 and then concatenation. ठीक है? I hope it is clear. Example, this program only or we'll take another. String 2 dot LT. Okay. str1 we have hello, let str2 we are having world, result I'm doing str1 plus some empty string and not empty string, string with space str2. And suppose in the mixed form I told you, like I'm writing
my age is, and then plus 49 if I write. So it is going to convert that 49 to string 49 and then concatenate. Now you can display these values. Okay? You can display result, you can display that mixed value and check. Can you see? The first str1 is hello, then the space, and then world. All three are concatenated and you get a final result. Here, before doing that concatenation, 49 is first converted to string. Then these both are concatenated and then you get the string. Okay? Then you can do concatenation with the help of compound arithmetic assignment, which is called as plus equal. Okay, so if I write S1 plus equal S2, okay, so what it will do now, wherever S1 is referring, S1 कोई तो string को refer करता रहेगा and S2 भी कोई तो string को refer करता रहेगा. ठीक है? Now what it will do, it will take S1 and S2, wherever S1 and wherever S2. Both the strings it is going to concatenate. Both the string concatenate, you'll get a new string. And whatever that new string you get, the result, that it will store in S1 only. So now S1 will contain the reference of this new string and this string reference gone. ये जो पुराना string था उसका reference S1 से चला गया और ये जो नया string build हुआ है इन दोनों का concat करके उसका result S1. Getting? Because it is compound operation. It is doing concatenation plus assignment. S1 plus equal to S2 is same as S1 is equal to S1 plus S2. Understanding? S1 is equal to S1 plus S2. तो S1 and S2 का concatenation जो भी result आएगा वो S1 में जाएगा. S1 में जो पुराना reference था वो चला गया. ये नया string का reference आ गया. ठीक है? I hope it is clear. See, so using plus equal to operator also you can do. Example C, let str equal to hello. Now I am writing str plus equal to world. So what is your new str? Hello space world. Again उसको plus equal to exclamation. तो hello space world को ये join, तो finally आपके पास ये string रहेगी. Is it? Do you agree? See, let str equal to hello. Now str plus equal to space world. Str plus equal to exclamation, and then I'm printing it. But actually all these things you should avoid less because tremendous strings are getting created. Internally, the number of strings are getting unnecessarily created. So you should be wise while doing all such operations. Okay? And now if I print it, I'll get final str, that is hello world exclamation. Getting? Instead of one, if there are three, accordingly. Okay, so I hope this way is also clear of doing concatenation. This is by plus operator, plus equal to. Third is by using one method called concat. Concat is a method of string object. Okay, so that also you can use it like this. One string will be the invoker to invoke that method. Now, I hope in one session, Anand had asked what is the difference in functions topic. When I was teaching function topic, then he asked me what is the difference between a function and a method. Getting? So finally, he concluded functions are independent, right? So I hope
You remember that. I remember whenever student ask me question, वो मेरे knowledge base में जाते रहता है. तो फ्यूचर में किसी ने मुझे वो क्वेश्चन पूछा, वो वापस मैं मेरे वो नॉलेज बेस से रिकॉल करके मैं वो देता हूँ. इसी मॉडल पे तो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना. मशीन लर्निंग के मॉडल्स वैसे ही होता है ना. इट गेट्स ट्रेन्ड इटसेल्फ, वो खुद को स्मार्ट बनाते रहता है, स्मार्ट बनाते रहता है. बाय द पास्ट नॉलेज, बाय द पास्ट, इट कीप्स ऑन एडिंग दैट नॉलेज ऑफ द पास्ट to answer the queries in the future. It is the same, our brain works on the same model, right? So this is a method. Why? Because to call that concat, I have to call it in context of a object. कौन सा string object देखो, s1 dot concat, and then here you can pass minimum one string and many, चाहिए उतने strings भेज सकते हो. So what this concat does is it will concatenate all these strings and return you a new string. तो कभी कभी अगर बहुत strings concat करने रहता है, writing plus 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 becomes tedious. So you pass all this to this concat, and one is the invoker. Now remember, this concat cannot be called as a function. It is a method. Why? Because it is invoked in context of that object s1 dot concat. ठीक है? So using concat method also you can do concatenation. Joins two or more strings together and returns a new combined string. मिनिमम दो तो देना ही पड़ेगा ना, एक इन्वोकर और एक पैरामीटर. ये कॉनकैट को इन्वोक करने वाला एक रहेगा और एक कम से कम एक पैरामीटर, और पैरामीटर्स देने दे सकते हो. ठीक है, देखो स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू डॉट डॉट जितने देने. एग्जाम्पल, str1 hello है, str2 world है. I'm writing str1 dot concat space str2. Will it concat all these strings and return you a new string? Yes or no? str1 hello, फिर space, फिर world, तीनों ज्वाइन करके आपको एक न्यू स्ट्रिंग मिलेगा. वो इन्वोकर जो होता है ना, वो डायरेक्टली लिटरल स्ट्रिंग भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ओनली. डायरेक्टली ले, क्योंकि एनीवे ये सब पूल में रहता है. ये सारे जो लिटरल स्ट्रिंग्स होता है ना, वो पूल में ही रहेगा, वो पूल वाला ही लेगा. देखो ये वाला हेलो और ये हेलो अलग नहीं है. स्कोप अगर सेम है ना, ये पूरे कोड का, ये पूरा कोड एक ही स्कोप में है. तो दिस हेलो एंड दिस हेलो इज नॉट डिफरेंट, दे बोथ आर सेम हेलो. तो hello dot concat, and then you can pass many more things. All these are concatenated and you get a new string. Getting? So I hope this way of concatenation is clear to you. I'll do it in this program only. Okay. In the result, you can collect, or directly if you want to print, you can print it. Print करना है, result में लाना है. ठीक है? So result already we have. Now I'm doing it by concat. str1 dot concat space comma str2. ठीक है? And then console dot log result. Okay, something else if you want, or another string I'm creating. Sentence, suppose. Okay, here I'm writing let dot concat. Okay, let us I'm writing space learn, and then I'm writing JavaScript, suppose. Okay, so it will concatenate all this and return you a new sentence. You can print and see that sentence. See the last sentence, let us learn JavaScript, all concatenated you got. Here str1 is hello, space str2 is world, everything joined, you got result.
Okay? So that part is clear to you guys. Just give me quick confirmation so that Yeah, it is next clear. thing. I think one thing like I wanted to ask Huh? about uh, when it is out of the scope, literal, then it will take from the new pool or it will create the means new literal Huh? Huh? out of the scope, right? Right. Till it is in the pool, it is referring to the sorry, till it is in the scope, it is same. Same it will take. Next, moving to template strings. Now, there's a special case, template strings. Now, what are template string? Any string which is preceded, preceded me, enclosed in backticks. Any string which is enclosed in a pair of two backticks. Single quoted, double quoted, we have. This is the another one called as template string. And how do you recognize that it is a template string? Enclosed in backticks. Backtick, backtick. It is called as a template string. Speciality of this template string is they are interpolated. Now I'll say what does interpolation means. What they do is they replace the value of a variable in that string. Correct? Means the string is going to get expanded by replacing the variable with its value. And how do you refer that variable within this template string? By writing dollar brace bracket variable, again brace bracket. So whenever within the string, if this thing is encountered, dollar brace bracket variable, it is replaced by the value of that variable. And the process of replacing the variable with its value is called interpolation. And only which strings are interpolated? Template strings. Getting? And another speciality of this template string is it can be extended to any line, any number of line, which is not allowed for single quoted and double quoted string. Double quoted and single quoted strings cannot be extended to more than one line, but template strings can. Getting? And as they are interpolated, they say within this expressions are also allowed. Like if you are writing dollar brace bracket and some expression you are writing x plus y, getting into something, into 2 if I'm writing, it will evaluate this expression as well. That is the specialty. And not only that, there can be a call to functions also. Within this, you can give call to any functions, methods, string methods you can call, or your user defined functions you can call. That is the benefit. So it is giving lot facility. Correct? And these are all the features given by modern JavaScript. Okay, so what is the speciality of template strings? First of all, what are template strings? Strings enclosed in backticks. Backticks. So whenever string is enclosed in that backticks, it's a template string. Speciality of template string, they are interpolated. Interpolation means what? Replacing variables with their value within the string. Correct? String interpolation in JavaScript is a way to insert variables or expressions inside a string. Getting? Using template literal. And how do we write that template literal? This backtick and dollar brace bracket. Dollar brace bracket will contain expression, variable, call to function, anything. But such dollar brace bracket is within these two backticks. That becomes a template string. Okay? Example I'll tell you. See, let name equal to Alice. Name is one variable, Alice. Age is one variable. And then I'm creating one template string. This is a template string. And within that template string, you're having this template literals. And how these template literals are created? With this dollar brace bracket. See, dollar brace bracket name, dollar brace bracket age. So this string will be interpolated.
name is Alice, so here Alice is replaced. Age is 25, 25 is replaced. So that process of expanding the strings by replacing variables with their value is interpolation. So it is replaced by value, and you get a new string that you are printing. Okay, see here. I'll take another example, string 3.html, right? Let name equal to, let age equal to, ठीक है? Let message equal to, and these are backticks, okay? And some message I'm giving. Hello, my name is dollar brace bracket name, and I am dollar brace bracket age years old. Something like that I've done. And then console.log, and I'm just printing that message. Okay, see ya. Has it substituted? Hello, my name is Ram and I am 45 years old. तो यहाँ वो नेम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुआ, यहाँ एज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुआ. इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन. गेटिंग? एंड इसकी खासियत है कि इसके अंदर अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो वो एक्सप्रेशन भी इवैल्यूएट होता है. इट विल इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन एज वेल. ठीक है, सी let a equal to 10, b equal to 20, and then I'm writing the sum is, and dollar brace bracket में a plus b लिखा है. ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो जाएगा. ऐसे कंपैरिजंस भी कर सकते हो. is a greater than b, and फिर मैंने यहाँ dollar a greater than b. It will actually check whether a is greater than b. So is 10 greater than 20? No, false. तो यहाँ रिप्लेस false करेगा, यहाँ रिप्लेस 30 कर देगा. Getting, guys? So that is the speciality, right? Let a equal to 10, b equal to 20, console.log backtick string लिख रहा हूं, and I'm giving message like that. Addition of dollar a and dollar b is dollar a plus b. Will it evaluate that a plus b? Yes, that is the speciality. Okay, then here in backtick, I'm just checking whether a is greater than b or a is less than b. This will also do. It will evaluate it. Okay, अब कुछ लोग बोलेंगे डायरेक्टली a लेस देन b लिखते तो भी तो आंसर आएगा. इधर बताने का क्या इंटेंशन है कि बैकटिक वाले स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने क्या लिखा एक्सप्रेशंस, तो वो एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट होते हैं. दैट इज व्हाट टू बी टोल्ड. मेन बताने का इंटेंशन ये है कि बैकटिक के स्ट्रिंग्स में कुछ भी एक्सप्रेशन आया तो वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने वाला है. देखो, here it has substituted 10, here it has substituted 20, and here the expression is evaluated a plus b 30, and here it is actually comparing a less than 10, sorry, b. So 10 less than 20, yes, true, इसलिए आउटपुट ट्रू आया. ठीक है. Then the same template string, you can use it as a multi-line string also, because single quoted and double quoted ये एक से ज्यादा लाइंस पे एक्सटेंड करके नहीं देता है. देखो, अगर ये मैंने एंटर किया, इज इट गिविंग अ एरर हियर? It will not allow you only to continue in more than one line. Understanding?
ओके। हाँ, मैक्सिमम प्रोविजन है कि एक बैकस्लैश डाल के फिर उसको कर सकते हो। एक ऐसा एक बैकस्लैश कंसेप्ट होता है। बट इसमें जब बैकस्लैश डालोगे ना, वो जस्ट कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है। ये स्ट्रिंग वहीं ऊपर ही जाने वाली है। अंडरस्टैंडिंग? बट अगर आपने बैकटिक लिया, ठीक है, एंड बैकटिक के अंदर मल्टीलाइंस लिखते हो, वो जैसे है वैसे ही प्रिजर्व होगी एज इट इज। अंडरस्टैंडिंग? मीनिंग अभी ये अगर मैंने एक वेरिएबल एक्स को दे दिया, ये पूरा, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग एंड आई एम प्रिंटिंग एक्स, इज इट प्रिजर्विंग एज इट इज? जैसे है वैसे प्रिजर्व कर रहा है। 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स ही करेगा। अंडरस्टैंडिंग और नो? देखो 3 लाइन थे, 3 ही है। ओके। अब यही अगर मैंने मल्टी लाइन, सॉरी, डबल कोटेड से मल्टी लाइन करने की कोशिश किया बाय पुटिंग अ बैकस्लैश, बैकस्लैश इज जस्ट कॉल्ड एज अ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ओके। वो उसको वो स्टोर नहीं होगा स्ट्रिंग में। इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर दैट बैकस्लैश। इट इज जस्ट टेलिंग टू योर जावास्क्रिप्ट इंजन दैट द स्ट्रिंग इज नॉट ओवर। जैसे इंग्लिश में देखो, आधा वर्ड नेक्स्ट लाइन पे तो हम एक डैश डालते हैं ना। इंग्लिश में ऐसा एक रूल होता है कि इफ वाइल राइटिंग, इफ यू आर गोइंग टू राइट हाफ वर्ड ऑन द नेक्स्ट लाइन, यू हैव टू पुट अ डैश। तो ये स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है। गेट इट? इसमें ये 3 लाइंस प्रिजर्व नहीं होगी, ये पूरा एक ही लाइन दिखेगा। कैन यू सी? तो वो बेसिक डिफरेंस होता है। इसलिए अगर आपको एक्चुअल मल्टीलाइन ही चाहिए रहेगा, एक्चुअल में मल्टीलाइन इज मल्टीलाइन ही चाहिए, जैसे है वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, देन यूज दिस टेम्पलेट स्ट्रिंग और बैकटिक वाले स्ट्रिंग्स यूज करो। देखो, जैसे 3 लाइन से 3 लाइंस ही यहां क्या हुए हैं, प्रिजर्व हुए। ठीक है? तो बैकटिक वाले स्ट्रिंग्स किस पर्पस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं? ओनली इंटरपोलेशन के लिए नहीं। It is not only for interpolation. It is also used for multi-line string. Okay, so and ये सब later version के JavaScript में दिया है. This doesn't come from the original. देखो बैकटिक एक लाइन लिखा है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जब प्रिंट करोगे जैसे है वैसे ही प्रिंट होगा। 3 लाइन से तो 3 लाइन ही दिखेंगे। इसकी जगह पे अगर आपने सिर्फ एक बैकस्लैश डाला रहता था और डबल कोट में लिया रहता था, इट विल नॉट प्रिजर्व दैट। वो सब एक के बाद एक ही प्रिंट होगा, बिकॉज उस केस में वो एक ही स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है ना, इट विल ट्रीट इट एज वन सिंगल लाइन स्ट्रिंग ओनली। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है? तो ये पार्ट भी क्लियर है। एंड टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में हम फंक्शंस का भी कॉल दे सकते हैं। इफ यू वांट, यू कैन गिव कॉल टू फंक्शंस आल्सो। ओके, आई गिव यू दैट डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो। जैसे अगर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ऐड, जिसको मैं ए एंड बी पास कर रहा हूं, और वो जस्ट रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। ठीक है? एंड आई एम राइटिंग कंसोल डॉट लॉग बैकटिक वाले स्ट्रिंग, इसमें लिख रहा हूं एडिशन ऑफ डॉलर ए एंड डॉलर बी इज, एंड अगेन डॉलर ब्रेस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आई एम गिविंग कॉल टू द फंक्शन एड एंड आई एम पासिंग ए एंड बी इज ऑल्सो पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो ये डॉलर ब्रेस ब्रैकेट में कॉल टू फंक्शन किया है, so it will give call to function, it will pass a and b, whatever answer come that will substitute here। interpolation ही हुआ है। ठीक है? see, is it giving addition of 10 and 20 is 30? 30 आया means पक्का है कि ये add call हुआ, कंट्रोल वहां गया, ए बी पास हुआ, फिर जो एडिशन है वो रिटर्न हुआ, वो रिटर्न वैल्यू ये स्ट्रिंग में रिप्लेस हो गई, इंसर्ट हो गई। ऐसे नहीं कि अपने ही फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस भी कॉल कर सकते हो। Getting? This is like console.log and I'm writing
backtick, and I'm writing like this: uppercase of dollar str1। str1 था ना अपने पास? नहीं, ये प्रोग्राम में नहीं है, सॉरी। नेम है ना इधर, तो नेम ले लेता हूँ। तो अपर केस ऑफ नेम is dollar brace bracket and name dot to uppercase। ठीक है, ऐसा मेथड कॉल कर सकते हो। See, is it uppercase of Ram is capital Ram? तो यहां हमने वो स्ट्रिंग का मेथड कॉल किया। राम तो स्ट्रिंग था, तो वो उसका अपना स्ट्रिंग क्लास का मेथड कॉल कर सकता है ना, तो नेम डॉट टू अपर केस। ऐसे यहां अपना मेथड कॉल किया, ऐड। गेटिंग? तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये एग्जांपल में देखो जैसे लिखा है, लेट नेम इक्वल टू राम कंसोल डॉट लॉग, एंड देखो डॉलर ब्रेस पैकेट में मैंने नेम डॉट टू अपर केस, जबकि मैंने उधर डेमोन्स्ट्रेशन में अपना फंक्शन भी कॉल करके दिखाया। इसलिए मैं कहा ना कि सब चीजें स्लाइड पे नहीं होती है, बहुत बार एग्जाम्पल्स बना के देते समय काफी एडिशनल एग्जाम्पल्स भी मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ठीक है, ओके। तो जस्ट क्विक कंफर्मेशन दोगे इधर तक? क्लियर? एवरीथिंग फाइन? Yes, okay. ओके, देन सम मोर मेथड्स। अभी हमने कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए कल मेथड्स देखे थे, कैर एट, कैर कोड एट। ऐसे और भी थोड़े मेथड्स है। मेथड्स लाइक converting the case of the characters in the string. Whatever your string is, you just want to convert the case of that string's characters. Only characters. Characters means letters A to Z. A to Z. So within that string, as many letters are there A to Z, they will get converted to upper or lower. Remaining will remain as it is. Like numbers, spaces, special symbol, they will remain as it is. So for that, they have given functions like to uppercase. These are lot functions similar to Java string class. Okay? But it is not going to modify the original string, because yesterday only we have discussed strings are immutable. As strings are immutable, it will not modify the original string. It will return you the new string. ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसे ही है, नया स्ट्रिंग आएगा जिसमें एस के सारे लेटर्स अपर केस में, बाकी की चीजें जैसे है वैसे है, और ये S1 में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही टू अपर केस की जैसे टू लोअर केस भी दिया है। दे हैव प्रोवाइडेड टू लोअर केस ऑल्सो। तो देखो, पहला है टू लोअर केस, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, meaning within that string as many letters are there, letters A to Z, they will get converted to lower. Those who are already lowercase, uppercase, lowercase. All other as it is. Digits, spaces, they will remain as it is. See, string dot to lowercase. ये मेथड है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसको इन्वोक किसके कॉन्टेक्स्ट में करते हो? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के, यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। किसी भी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इन्वोक करते हो तो उसको हम मेथड कहते हैं। करेक्ट? एग्जाम्पल देखो, दिस इज स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, str डॉट टू लोअर केस, यही हेलो वर्ल्ड लोअर केस। इसमें देखो स्पेस स्पेस ही रह गया। इसमें जावास्क्रिप्ट 2024, ठीक है, ये मिक्स्ड है, कुछ लोअर केस है, डिजिट है, स्पेसेस है, कुछ अपर केस है। तो अपर केस लोअर केस बन गया, बट बाकी चीजें एज इट इज रह गई। गेटिंग? ओके, we'll take an example.
ओके, लेट S1 ये पूरा ही अपर केस है, हेलो वर्ल्ड अगर लिखता हूं, एंड देन कंसोल डॉट लॉग S1 डॉट टू लोअर केस। इसमें अगर मिक्स्ड लिखता हूं, हेलो वर्ल्ड 2026, ओके, तो जो लेटर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो लेटर्स नहीं है हेलो वर्ल्ड 2026, और इसी में मैं जावास्क्रिप्ट भी दे देता हूँ, वेर जे एन एस इज कैपिटल, बाकी के पहले ही लोअर केस है। ठीक है, चेक, इज इट कन्वर्टेड टू होल लोअर केस? नंबर्स नंबर्स ही रह गए, स्पेशल सिंबल वैसे ही रह गए, स्पेस वैसे ही रह गया, ओनली प्रोसेस उसने किस पे किया, लेटर्स, एंड नया स्ट्रिंग आया। अगर आप S1 को प्रिंट करके देखते हो तो इट इज एज इट इज, देखो S1 को डिस्प्ले किया तो वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, इसका एक प्रूफ है कि इट इज, देखो ये एज इट इज है, दैट स्ट्रिंग्स आर immutable, it doesn't do change in the original string। ठीक है, तो टू लोअर हो गया ना अपना, हाँ, यही था टू लोअर टू बी डिड, देन टू अपर केस, अभी टू अपर केस सेम converts the letters to uppercase, string dot to uppercase, ये एग्जांपल ले रहा हूं, let str equal to hello world, str dot to uppercase, everything is converted to uppercase। ओके, इसका यूसेज कहाँ होता है, देखो अगर आपको ये दो को कंपेयर करना है, बट आपको कंपेयर करना है एज अ insensitive comparison, I want to compare these two strings but it should ignore the cases, जस्ट चेक करना है कि दोनों में लेटर्स सेम है कि नहीं, केस कैसे भी रहने दो, तो डायरेक्ट कंपेयर करने गए तो फॉल्स ही आने वाला है, राइट और नो गाइस, str1 डबल इक्वल टू str2, ऐसे अगर मैंने ये दो स्ट्रिंग्स को डायरेक्ट कंपेयर किया डबल इक्वल, ये तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली ये दोनों अलग है ना, जावास्क्रिप्ट में JNS कैपिटल है, इसमें ये पूरा लोअर है, तो वो फॉल्स ही आने वाला है, बिकॉज बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। बट मुझे चाहिए था कि स्ट्रिंग का केस कैसे भी रहने दो, सिर्फ कैरेक्टर्स मैच होने चाहिए, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करना है। तो फिर क्या करो, पहले दोनों को एक तो लोअर में लाओ या एक तो अपर में लाओ और फिर कंपेयर करो, तो एक तो दोनों को लोअर में लाया और फिर कंपेयर किया तो वो सेम आ रहा है ना, अगर वो स्ट्रिंग सेम है, कैरेक्टर्स आर सेम इररेस्पेक्टिव केसेस, केसेस कुछ भी रहने दो, बट कैरेक्टर्स अगर सेम है तो फिर वो ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि आपने पहले दोनों को लोअर में लाया और फिर कंपेयर कर रहे हो। इज इट राइट गाइस? आई होप इट इज क्लियर। देखो, लेट S2 इक्वल टू, जैसे ये लिखा है जावा स्क्रिप्ट, एंड लेट S3 इक्वल टू कंप्लीट स्मॉल, S3 लिखना जावास्क्रिप्ट। तो हमें पता है कि कंटेंट सेम है दोनों का, दोनों में जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट है, बट केसेस अलग है। तो डायरेक्ट जब कंपेयर करने जाओगे, कंसोल डॉट लॉग S2 डबल इक्वल टू S3, obviously it's going to give you false। Why? Because double equal to checks the values, and as their values are different cases, इनका अल्फाबेटिकली अलग है ना ऑर्डर, तो फॉल्स आता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैंने पहले दोनों को लोअर में लाया, ठीक है, डॉट टू लोअर या अपर, वाइस वर्सा, एनीथिंग, and then you try to compare, that time what will happen, both the strings will be exactly same, and फिर कंपेयर करोगे तो आपको ट्रू आएगा। ठीक है,
तो ऐसे अगर इनसेंसिटिव कंपैरिजन करना है तब भी ये फंक्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर। अच्छा, अगर स्ट्रिंग के बीच में हम लोग का कोई भी नंबर वगैरह है तो हम लोग लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर नहीं कर सकते ना उसको। हो सकता है ना, अगर स्ट्रिंग के लेक्सिकोग्राफिकल बीच में नंबर स्ट्रिंग के अंदर ही है ना। स्ट्रिंग के अंदर ये नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है। हाँ, तो भी वो लेक्सिकोग्राफिकली ही कंपेयर होगा। उनको भी तो ASCII वैल्यूज है ना, हाँ। 2025। देखो अगर ऐसे देता हूँ, अगर ये स्ट्रिंग लेता हूँ एंड आई एम गिविंग लाइक दिस, जावा 21 लेस देन जावा 22, गेटिंग, चलेगा ना? क्यों? क्योंकि लेटर्स भी, उनको भी तो यूनिकोड है। तो JAVA ये सेम है, तो फिर 2 and 2 लेगा, तो 2 का यूनिकोड भी सेम है, तो 1 and 2 का देखेगा। तो 1 and 2 में 1 का यूनिकोड 2 के यूनिकोड से लेस है, तो इट विल गिव यू ट्रू। ओके। ट्रू ही आएगा। स्ट्रिंग्स के अंदर नंबर्स रहेंगे, स्पेशल, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डबल कोड के अंदर जो भी है हर एक को यूनिकोड है। तो लेक्सिकोग्राफिकल कंपेयर होता है तब वो यूनिकोड कंपैरिजन पे ही काम चलता है ना, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग यूनिकोड्स ही देखेगा ना, राइट? देखो अभी जैसे ये console.log एंड मैं कंपेयर कर रहा हूं 100 <less than 2, बट स्ट्रिंग में, इट इज इन स्ट्रिंग, डबल कोट 100 <less than 2 ट्रू आता है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो लोगों को लगता है 100 कैसे 2 से कम रहेगा, 100 is not less than 2, so it should give false, but it will give true. Why? Because here lexicographical comparison, तो वो कंपैरिजन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर 1 है और ये 2 है, तो 1 का यूनिकोड 2 से कम है, डायरेक्टली ट्रू आ जाएगा। देखो, इज इट समझ गिविंग गए। ट्रू? देन कम्स सम सर्च मेथड्स। सर्च के भी कुछ मेथड्स ये है, लाइक सर्च भी है, इंडेक्स ऑफ है, इंक्लूड्स है, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन। हमें ये भी इंटरव्यू राउंड्स में बहुत बार कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ऑन स्ट्रिंग देता है, तो उसमें इन फंक्शंस को करके आप काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, in that the first one we are going to learn, that is index of. Okay, it is going to search one string in this string, this means जो इसको इन्वोक करेगा, क्योंकि ये मेथड है, तो ये s है, s1 डॉट इंडेक्स ऑफ, एज इट्स अ मेथड, तो इन्वोक करने के लिए एक स्ट्रिंग तो होना ही चाहिए एंड एक दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल सर्च s2 इन s1, फर्स्ट अकरेंस। मे बी s2 बहुत बार अपीयर होता रहेगा, बट इट विल check for the first occurrence. It will search s2's first occurrence in s1, and wherever found it will return that position. इसलिए तो फंक्शन को नाम इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स रिटर्न करेगा, एंड एब्सेंट इट विल रिटर्न -1। अगर s2 s1 में एब्सेंट है तो -1, प्रेजेंट है तो जहां प्रेजेंट है उधर का पोजीशन ला के देगा। गेटिंग? एंड बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, बट अगर आपको चाहिए कि ये सर्च एक पर्टिकुलर पोजीशन से शुरू होना चाहिए, तो यू कैन गिव द स्टार्ट ऑल्सो टू दैट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, s2 एंड यू कैन गिव द स्टार्ट इंडेक्स। तो अगर स्टार्ट इंडेक्स दिया है तो इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दैट पोजीशन, फ्रॉम s1। s1 में बिगिनिंग से सर्च नहीं करेगा, ith पोजीशन, ये पूरा s1 है, तो इसमें जाएगा ith पोजीशन पे और वहां से आगे किसको ढूंढेगा, s2 को। तो वहां से आगे s2 जहां कहीं पहली बार अकर हो रहा है वो पोजीशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दैट सिंपल इट इज। So returns the index of first occurrence of a substring.
If found, wherever the first occurrence is found, it will return the position. And if not, -1. सिंटैक्स देखो ऐसे, एक स्ट्रिंग तो इन्वोकर है जिसमें सर्च करना है, जिसमें सर्चिंग करना है ये इन्वोकर डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड जो सर्च करना है वो सर्च वैल्यू. And if you want to start doing searching from one particular position, then you can give from index. When you don't give from index, स्क्वायर में लिखा है ना तो ऑप्शनल है. जो भी मैं स्क्वायर में लिखता हूँ वो पार्ट ऑप्शनल. सो इफ यू डोंट गिव, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है. Then examples we'll see. Few examples. This is your original string, hello world, hello JavaScript. str dot index of hello. पहला occurrence ही ढूंढा उसने hello का. कहा मिल गया, ये पहले प्लेस पे, 0th प्लेस पे, इसलिए पोजीशन 0. वर्ल्ड का पहला occurrence, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6th पोजीशन पे. बट थर्ड एग्जांपल में देखो, यू आर सर्चिंग हेलो, बट हेलो का सर्च कहां से शुरू किया? 1 से. ई से आगे हेलो को ढूंढ रहा है. स्टार्ट पोजीशन 1 दिया है ना, तो 1 ई है, तो ई से आगे हेलो यहां मिलता है, और उसका पोजीशन 13 है. 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. अंडरस्टैंडिंग? So why in this case for this hello 13 and for this hello 0? Because यहां से स्टार्ट पोजीशन नहीं दिया था तो बिगनिंग से शुरू किया. यहाँ स्टार्ट पोजीशन 1 दिया है तो 1 से आगे हेलो यहां मिलता है 13 पे, एंड पाइथन तो है ही नहीं इसमें, इसलिए -1. गेटिंग? एंड ये ऐसे फंक्शंस आप ऐसे इफ एल्स में यूज कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए दैट इज जावास्क्रिप्ट रियली प्रेजेंट इन str. Yes, then I want to print this. So you can use like this. If index of is not -1, means it is found. Getting? And कभी कभी ये टू नॉट इक्वल यूज करना बेटर होता है क्योंकि वो डेटा टाइप भी चेक करता है. Getting? कभी कभी क्या हो सकता है, अ, अगर दो इक्वल की जगह पे सिंगल इक्वल लिखा है एंड आप पोजीशन 0 से चेक कर रहे हो, या फिर ट्रू या फॉल्स से, तो यहां से अगर 0 आया तो वो उसको फॉल्स ट्रीट कर लेगा ना. तो इसलिए गुड प्रैक्टिस है कि डेटा टाइप भी चेक होना चाहिए एंड वैल्यू भी चेक होना चाहिए. तो फॉर दैट रीजन ये टाइप का ऑपरेटर यूज करना बेटर. गेटिंग? हाँ, बट अगर आपको कंफर्म्ड है कि दोनों वैल्यूज का डेटा टाइप सेम ही रहने वाला है, देन यू कैन यूज नॉर्मल नॉट इक्वल. ठीक है. गेटिंग? तो मीन्स ये वही हाँ, मीन्स अगर इसमें अगर नॉट ऑपरेटर है और इक्वल्स टू अगर एक ही है, तो इसमें हम लोग मतलब वो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा, और इसमें दोनों चेक नॉट होता है. ऑपरेटर और टू इक्वल्स टू है, वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है. वैल्यूज चेक करेगा, ठीक है। बस इररिस्पेक्टिव डेटा टाइप अलग भी रहे तो भी वैल्यू सिर्फ मीन्स, एक अगर डबल कोट फाइ और एक जस्ट फाइ तो भी इट इज ट्रू. बट इसमें नहीं होगा, इसमें डेटा टाइप भी पहले कंफर्म होगा. मीनिंग इन शॉर्ट, इसमें कास्टिंग नहीं होता है. टाइप कोएर्जन्स आर नॉट डन. अगर आप डबल इक्वल टू से कुछ चेक कर रहे हो, 5 एंड डबल कोट 5, ठीक है, तो ये डबल इक्वल टू है ना, तो इसको पहले वो नंबर में लेके आएगा एंड फिर कंपेयर करेगा. ट्रू. बट 3 इक्वल लिखा रहेगा तो ये कास्टिंग करेगा ही नहीं, जो डेटा टाइप में वही रखेगा एंड पहले डेटा टाइप कंफर्म करेगा. तो इफ द डेटा टाइप ओनली इज डिफरेंट, डायरेक्ट फॉल्स. तो ये हमने देखा है, यू हैव टू रिवाइज ऑल द ऑपरेटर्स अगेन. ऑपरेटर्स जब लिए थे मैंने, कितने सारे कॉम्बिनेशन एग्जांपल्स भी लिए थे, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स. ठीक है, तो ये सर्च क्लियर है. ओके, लेट एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूं, हेलो जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं, राइट. एंड फिर हम लोग
उनके पोजीशंस चेक कर रहे हैं। s डॉट इंडेक्स ऑफ and checking hello console dot log s dot index of and checking world, और मैं चेक कर रहा हूं पाइथन, या फिर मैं चेक कर रहा हूं हेलो ही, बट मैं स्टार्ट पोजीशन दे रहा हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। कैन यू सी, पहली बार हेलो का पहला अकरेंस ये 0 पे ही मिल गया, वर्ल्ड का अकरेंस 6 पे मिल रहा है, पाइथन तो है ही नहीं इसलिए -1, और ये हेलो ढूंढ रहा है बट सर्च कहां से शुरू कर रहा है, 1 से। सो 1 से आगे हेलो उसको 13 पोजीशन पे मिलता है इसलिए 13। ओके, एंड जैसे इंडेक्स ऑफ है वैसे एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है। Getting? It will search the last occurrence of that search string. वो जो भी सर्च स्ट्रिंग आप दोगे, s1 dot last index of and whatever the search string you give. So it is going to search s2 in s1, s2 in s1. But which occurrence? The last occurrence. Means राइट साइड से पहला, ऐसे सोच लो, राइट से पहला, बट पोजीशन राइट से काउंट नहीं करेगा, नॉर्मल पोजीशन, पोजीशन अपना लेफ्ट से ही कंसीडर होगा। तो वैसे सोचने से अच्छा ऐसे सोचो कि वो लास्ट अकरेंस ढूंढ रहा है। ठीक है, सी, तो रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग। सिंटैक्स इस तरह से, यहां भी आप बता सकते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द सर्च, करेक्ट, फ्रॉम इंडेक्स, राइट। बट इस केस में ये जो फ्रॉम इंडेक्स जो होता है ना, ओके, ये स्टार्ट नहीं होता है, इसका कहना है कि यहां सर्च रुका देना है इसके पहले तक, करेक्ट। जैसे नॉर्मली इंडेक्स ऑफ में मैंने अगर 1 लिखा तो 1 से ढूंढना शुरू किया, यहां ढूंढना रुका देगा, मीन्स इस इंडेक्स के पहले का लास्ट अकरेंस, दैट वे, करेक्ट। सी, तो पहले हम ढूंढ रहे हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ हेलो, तो हेलो का लास्ट इंडेक्स ये है 13, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, अब ओ 3 बार है, 1 2 3, तो ये लास्ट ओ किधर है, 17। बट इसमें देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि लास्ट अकरेंस ऑफ हेलो ढूंढो, बट सर्च कहां रुका देना है, 9 पे, माने 9 के पहले तक का लास्ट अकरेंस। यहां उल्टा होता है, 10 से शुरू नहीं करेगा, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 2, इट विल 10, इट विल स्टॉप एट 10। इंडेक्स ऑफ में 10 से शुरू करता था, 10 से शुरू करके पहला अकरेंस, यहां शुरू 0 से ही होगा, बट सर्च रुकाएगा कहां, 9 पे, मैं 9 के पहले तक का लास्ट अकरेंस। तो बताओ, अभी ये 10 है तो 10 मीन्स 9 तक ही जाने वाला है, 10 एक्सक्लूसिव होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके पहले हेलो का लास्ट अकरेंस किधर है, इसके पहले हेलो का लास्ट अकरेंस 0 पे, इसलिए 0 आया। सी, सर्च बैकवर्ड फ्रॉम इंडेक्स 10, ऐसे बोलने की जगह पे ऐसे सोचो, स्टॉप एट 9, मीनिंग सर्च विल स्टार्ट बाय डिफॉल्ट फ्रॉम 0, बट स्टॉप कहां करेगा, 9th पोजीशन, एंड 9th पोजीशन, एंड 9 एंड 9 के पहले का लास्ट अकरेंस। मैं ओ के लिए करके दिखाता हूं, समझेगा आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर ओ लिखता हूं और 10, तो 10 के पहले ओ का लास्ट अकरेंस, 10 कहां आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है तो 9 तक, तो इसके पहले ओ का लास्ट अकरेंस क्या है, ये वाला सेकंड, करेक्ट,
दैट इज 7, तो इट विल गिव यू 7। तो ऑपोजिट है समझ लेने का कि इंडेक्स ऑफ में ये जो देता है वहां से सर्च करना शुरू करता है, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ में ये जो नंबर देता है इस नंबर पे सर्च रुका देना है, इस नंबर के पहले तक का लास्ट अकरेंस। अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? देखो इसमें मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ कंसोल डॉट लॉग एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ हेलो देता हूं, नॉर्मल, मैं यहां स्टार्ट दे रहा नहीं हूं। ओके, तो वेयर इज द लास्ट अकरेंस ऑफ हेलो? 13, right? But if I give console.log s dot last occurrence of o, ठीक है? तो where is the last occurrence of o here? The third o and o, 17 आएगा. But if I give here the position 10, so where it will search the last occurrence before 10, 10 के पहले तक का last occurrence, ठीक है? तो 10 के पहले का लास्ट अकरेंस क्या है? अगर 10 इधर है तो 10 के पहले का लास्ट अकरेंस ऑफ ओ क्या है? ये वर्ल्ड का ओ, करेक्ट? देखो 7 आता है। इस केस में सर्च स्टॉप कहां करना है और इस केस में सर्च शुरू कहां से करना है? क्योंकि यहां से शुरू करके पहला अकरेंस और यहां इधर रुकाएगा और इसके जस्ट पहले का लास्ट अकरेंस, ठीक है? तो दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? तो फ्यू मोर सर्च फंक्शंस आर देयर, फिर सर्च फंक्शंस है, स्प्लिट फंक्शंस है, ओके? तो थोड़े और है जो हम कल देखेंगे।